Chennai. Assalamu alaikum and hello everyone. So in this video we will going to solve AS level accounting paper 2022 fundamentals of accounting February March 2026 9706 paper 22. So let's start solving question number 1. Question number 1 says Osam owns a retail business. He does not maintain a full accounting records. This means he does not maintain accounting records means it's a question of incomplete records or single entry. All sales are made on cash basis, so we are not selling anything on credit. Purchases of goods for resales are made in cash and on credit. So we could purchase goods on cash and credit basis. At 1st January, the business assets and liabilities included the following. तो ये आपको स्टार्ट का डेटा दिया हुआ है. Then the following information is available for the year ended. Receipts and payments का डेटा आपको दिया हुआ है. Then there was unpresented check of 680 for payments to trade payables at the year end. Then payments to trade payables were made after deducting cash discount of 390. Then cash takings were banked आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग पेमेंट्स. यानी आपने जो बैंक पे पैसे डिपॉजिट करवाए कैश सेल्स के, वो ये सब पेमेंट करने के बाद डिपॉजिट करवाए. द इक्विपमेंट सोल्ड हैड ए कैरिंग वैल्यू ऑफ 800 एट द टाइम सेलिंग एट 31 दिसंबर 2025. तो ये आपको एंड का डेटा दिया हुआ है. फर्नीचर की ये वैल्यू थी. रेंट ओइंग द जनरल एक्सपेंसेस ये थे. द बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल्स वाज 5220. इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 1134. नाउ few tips. See, we've got to make purchase. We need to take out the total of purchases and we need to prepare statement of profit and loss, and these are our working space. So make sure you review the questions before you start with the questions, so that you do not do any of the workings pertaining to the question anywhere else except for the spaces provided by the examiner, because the examiner would only going to check your calculations or your workings in the designated boxes or designated spaces he has provided you in the paper. So make sure you take this into account while solving the paper. Now in order to figure out the value of purchases, we will have to make the account of purchase ledger control account or trade payables, and from there we will going to get the value of credit purchases. Once we have got the value of purchases, then we will add cash purchases into it in order to figure out the value of total purchases. So we can call it purchase ledger control account. As you know, purchase ledger control account is a liability account, and if the liability increases, this will get credited, and if it decreases, it will get debited. So our liability or trade payables at the start of the year were 4914. So our balance PD is 4914, and balance CD we will going to write on the debit side. So our balance CD at the end of the year is 5520. Now let's look at transactions pertaining to our trade payables. So if you look here, the amount that you paid to trade payables was 35724, but it also says there were unpresented check of 680 for payments to trade payables at the year end. What do we mean by unpresented checks? It means that we had already given these checks of $680 to our suppliers, but they did not go to bank and presented these checks. तो जाहिर सी बात है, जब सप्लायर्स जिसको हमने चेक दे दिए वो चेक जाके प्रेजेंट ही नहीं करेगा, जब तक उसको पैसे मिलेंगे नहीं, और जब तक उसको पैसे मिलेंगे नहीं मेरे अकाउंट से भी पैसे कटेंगे नहीं. तो अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब ये कि अमाउंट मेरे एंड से तो मैंने चेक दे दिए 680, कभी ना कभी जाके सप्लायर्स ये पैसे विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ये पैसे विड्रॉ नहीं करे बैंक से, तो इसलिए मेरे बैंक से कटे नहीं है. तो अब ये बैंक स्टेटमेंट में तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पैसे कटे नहीं है, लेकिन अगर आप खुद अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे होते, ये तो आपको बैंक स्टेटमेंट से मिला है ना, तो आपने जरूर ये 680 को भी अकाउंट फॉर कर लिया होता, आपने एंट्री में रिकॉर्ड कर लिया होता, आपने एंट्री कर ली होती बैंक क्रेडिट और सप्लायर्स डेबिट. अब क्योंकि ये उसमें अकाउंट फॉर नहीं हुआ, यानी ये ट्रेड पेबल्स जो आपने पे करा उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो इसीलिए अब आप खुद ऐड कर लेंगे. 680 भी जैसे आपने पे तो कर दिया, भले उन्होंने नहीं निकाले लेकिन आपने पे तो कर दिए, इसीलिए आप टोटल जो पे करो उसमें 680 भी ऐड कर देंगे. तो
तो इसीलिए आपकी जो वैल्यू है जो आपने पे करी है वो ट्रेड पेबल्स को $36,404 पे करी है. सो वी विल गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ बैंक एज 36,404. अच्छा, it's better if I show the working in the question. Let's say I should write here only plus 680. So examiner gets to know how I'm getting this value. Then discount received. Discount received 390. Discount received is our income, discount received credit, and supplier's debit or liability debit. So we're going to write discount received on the debit side. Now, after discount received, have we got anything else in the question pertaining to our trade payables? I don't think so. We have got any other information. So here we will going to figure out the value of purchases. Now, add all these three values. You will get the total of the debit side, which is 42314, and this is also 42314. From 42314, you will going to subtract 4914 and you will get the value of purchases, which is 37,400. Now you have got credit purchases. In order to figure out the value of total purchases, you will add cash purchases as well. So the value of credit purchases is 37,400, and the value of cash purchases, we would have paid cash for these purchases. So let's see how much cash we paid. So we paid 3172 for cash purchases. So we will going to add this. So the total credit purchases are 40572. These are total purchases. And don't forget to write dollar with this. Don't forget to write dollar with this. Total purchases equals to dollar 40572. If you do not put dollars with this value, the examiner might deduct some marks. Hence, to be on the safe side, it's necessary you put the dollar sign as well with this value. Now, let's move on to statement of profit or loss. So the new name for income statement is statement of profit or loss. So you should use this name only rather than using income statement from now on, because then you would be on the safe side. You wouldn't have any risk of losing out marks because you're following the exact terminology that the examiner want. So don't use income statement from now on. Use a statement of profit or loss. So in income statement, first we will going to put dollar sign over here. The first item that we can write is revenue. Now for revenue, if you look at it, all revenue was on cash basis as we read at the start of the question. So cash takings. So the total cash that was deposited from the total sales or revenue that we made during the year was 79,320. But the business, see, the business got some money, then they spent, they were selling product during entire year. From that money which they received from their customers, they spent some of the money, they made some payments and deposited rest of the money into the बैंक अकाउंट. सही है. सो इसीलिए 79320 तो वो डिपॉजिट करवा दिया. बाकी जो सेल्स के पैसे थे उसमें से ड्रॉइंग्स कर ली, गुड्स खरीद लिए, वेजेस के दे दिए. तो इसीलिए इन ऑर्डर टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ टोटल सेल्स यू विल आल्सो ऐड दीज वैल्यूज. तो हम ये वहीं पे ऐड कर लेते हैं. 79320 प्लस 2850 प्लस 3172 प्लस 13860. So if you add all these four values, you will get the total of sales, which is 99202. 99202. So this is the value of
revenue or sales. Now after this we will going to write less cost of sales. In cost of sales you will write inventory at start first. So the value of inventory at start is 8792. After this you will write purchases that we figured out in the question, which is 40572. And then you will add carriage inwards because we also paid money for carriage from our bank account. This is carriage inward of $148. We do not have any other items such as goods drawings or anything else purchase returns. So we will going to subtract inventory at end. So inventory at end is 11434. 11434. Now once you add subtract all these values, sorry we have to add carriage inwards, so we won't put bracket around it. So the total cost of sales that you will going to get is 38078. Once you subtract cost of sales from revenue, you will get gross profit, which is 61124. Gross profit. Now since we received discount as well, so I think we have other incomes as well, so I'm going to put the heading other incomes. Add other incomes. So in other incomes, first we're going to write discount received, which is $390. After discount received, let's see if we've got any other income or not. So the furniture, some the equipment sold during the year had a carrying value, मतलब book value of 800 at the time of sale. तो हमने बेचा कितने में है, 945 आ रहे, देख रहे हैं पैसे बेच के. तो इफ़ वी सेल अबव बुक वैल्यू और अबव कैरिंग वैल्यू, जितने ऊपर में बेचेंगे, आपकी बुक्स में एक चीज़ है 800 की, आप मार्केट में गए ज़्यादा में बिकी तो ऑब्वियसली इट विल बी योर गेन, राइट. और अगर कम में बिकी इट विल बी योर लॉस. तो आपकी बुक्स में एक चीज़ 800 की और आप बेच कर आए 945 में, तो जितने एक्स्ट्रा में बेच कर आए वो आपका गेन हो गया. एंड हेंस 945 माइनस 800 वुड बी योर गेन ऑन डिस्पोजल. So these are the two other incomes. 145. So if you add both these, you will get total 535. And if you want, you can add these value, or if you don't want, you can leave it like this as well. So if you add this, the total that you will get is 61659. Now you can write less expenses. In expenses, you will write, let's look at the payment side of the bank account. What expenses we paid? Additional equipment, capital expenditure, a loan interest. So let's see. So loan, we have taken the loan from bank at an interest rate of 10%. So irrespective of the fact how much interest we have paid, we're going to take out the 10% of 8400, because we have used this entire money during the entire year in our business. So 8400 का आप 10% ले लें. So this is your expense 840. After this, after loan interest, carriage and what we already have dealt with, drawings is not our expense. Journal expenses 4410 is what we have paid. And other payables में journal expenses है. Other payables का मतलब expense है ना, तो other payables में owing expense आते हैं. तो owing expense at the start of the year, end of the year का owing minus होता है, start of the year का owing add हो, sorry, end of the year का owing add होता है, और opening owing क्या होगा, minus होगा. तो इसलिए 183 minus होगा ये.
और जर्नल एक्सपेंसेस ये 770 एंड में प्रीपेड है, तो प्रीपेड क्लोजिंग प्रीपेड माइनस होता है, तो 770 भी माइनस होगा और 183 भी माइनस होगा। सो 770 भी माइनस होगा और 183 भी माइनस होगा from journal expenses. So if you subtract both these value, 4410 minus 770 minus 183, so the value that you will going to get is 3457. 3457. Again, my mistakes, I did not use this space. We have to use this space. We have to use this space that which examiner has provided. Rent of 510 was owing at the end and other receivables. शुरू में आपका रेंट प्रीपेड है, तो ओपनिंग प्रीपेड क्या होगा, ऐड होगा, 320 ऐड होगा A380 में, और ये जो रेंट आखिर में होंगे क्योंकि ये क्लोजिंग होंगे तो ये भी ऐड होगा, तो 510 प्लस 320 प्लस A380, ये यहाँ पे आपको वर्किंग शो करनी है, A380 प्लस 520 510 plus 320, sorry, 510 plus 320. So if you add these value, तो ये आ जाएगा $9210, $9210। इसके बाद वेजेस हमने पे करी है कैश से 13860 एंड इसमें नो ओइंग प्रीपेड, सो वी गोइंग टू राइट एज इट इज। इसके बाद आफ्टर वेजेस we'll have to take out, I think, depreciation on our own. So since we do not have any policy pertaining to depreciation, we're going to use revaluation method, which is value at start plus purchases. अच्छा, depreciation के लिए भी हम we should use this working, सही है, so we should use this working space value at start, जितनी भी वर्किंग हो आपको यहाँ शो करनी है, do not attempt to make mistakes and show working at irrelevant places। सही है, मैंने भी मिस्टेक की लेकिन आपको यहाँ पे शो करनी है। वैल्यू एट स्टार्ट, सो द वैल्यू एट स्टार्ट इज, शुरू में 19,500 थी, वो ये आपने ख़रीदा होगा तो पैसे पे किए होंगे, सो विल लुक एट द पेमेंट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट। सो पेमेंट साइड आपको दी हुई है, आपने एक एडिशनल इक्विपमेंट खरीदा है 3200 का, सो विल गोइंग टू ऐड इट। अब आपने कोई बेचा है, बेचा होगा तो देखें जितने में बेचा है वो वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, जितने में जो बेचा है उसकी नेट बुक वैल्यू कंसिडर करेंगे, कैरिंग वैल्यू। तो जो बेचा है उसकी कैरिंग वैल्यू क्या थी, या नेट बुक वैल्यू 800। और अब आप एंड में देखें वैल्यू क्या बच गई, वैल्यू बच गई एंड में 19,500। तो 3200 माइनस 800, अच्छा वैल्यू एट स्टार्ट भी 19,500, सॉरी शुरू में आपके इक्विपमेंट की वैल्यू है 20,800, वैल्यू एट स्टार्ट इज 20,800, सो आई एम नॉट श्योर व्हाई आई रोट 19,500 at the start, 20,800 minus 800, 20,000, 20,000, 23,200 minus 19,500, 32,000 plus 500, 3,700 is the value of your depreciation। तो यहाँ से आप 3,700 यूज़ करेंगे। आई डोंट थिंक वी हैव गॉट एनी अदर एक्सपेंस। अच्छा ये भी आप लिखें, पूरा डिप्रीसिएशन की फुल फॉर्म लिखनी है आपको पहली बात, और किस चीज़ की डिप्रीसिएशन है ये भी आपने लिखना है, डिप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, furniture and equipment। Make sure you specify all of these value, all of these things, otherwise examiner will not give you any marks। फुल फॉर्म लिखना ज़रूरी है, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी। प्रिपेयर में तो ख़ास तौर पे इन चीज़ों का ख्याल रखना है, बिकॉज प्रिपेयर का मतलब एग्जामिनर इज़ एक्सपेक्टिंग द प्रॉपर फॉर्मेट्स एंड लेआउट, ही इज़ नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन देम,
and after you add all these five values, you will get the total 31067 of all these expenses. Now 61659 minus 31067, you will get 30592, which is your profit for the year. Profit for the year. So first question was for 5 marks and this was for 14 marks. So 5 plus 14, 19 marks are done. Explain with relevance to with reference to relevant accounting concept how drawings are treating in the financial statements of a business. तो एक concept है which is business entity concept. वो कहता है कि affairs of the owners and business should be kept separate. ओनर के मामलात और बिजनेस के मामलात को अलग अलग रखें. तो ओनर के मामलात के लिए आपने एक अलग हेडिंग बनाई हुई कैपिटल, जिसमें अगर ओनर जितनी इन्वेस्टमेंट करता जाता है वो ऐड होती जाती है, पैसे निकालने इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल कम हो जाएगा. फिर ड्राइंग्स ओनर जो भी पर्सनली उसके लिए लेके जाता है वो ड्राइंग्स में शामिल होता है. सो दीज आर द टू हेड्स फॉर द अकाउंट्स ऑफ द ओनर. उसमें ही जाएगा. तो जो भी पैसे ओनर ने बिजनेस से विड्रॉ करे दैट वुड बी एडेड टू ड्राइंग्स एंड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस. सही है, इसीलिए ड्राइंग्स एक्सपेंस में भी नहीं आती बिकॉज दैट्स नॉट एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस. एज पर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, as per the business entity concept, the affairs of both the owners and business should be kept should be kept separate should be kept separate, and hence drawings is not shown in expenses but subtracted from capital to reflect the investment at the end by the owner. सही है. कैपिटल एट स्टार्ट में आप प्रॉफिट ऐड करते हैं, ओनर का कैपिटल या इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, ड्राइंग्स माइनस करते हैं तो ओनर का जो एंड में कैपिटल बच गया वो कम हो जाता है उससे ड्राइंग से. तो इसीलिए आप वहाँ एडजस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे ओनर की जो बिजनेस में पैसे लगे हुए वहाँ पता चल रहा है. स्टेट टू रीजंस व्हाई हुसाम में हैव नॉट चूजन टू मेंटेन फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब कि आप शुरू से डबल एंट्री मेंटेन करना, टी अकाउंट्स बनाना, फिर ट्रायल बैलेंस वगैरह जनरेट करना, यानी प्रॉपर सारे अकाउंट्स फॉलो करना. कि why is Assam not maintaining full accounting records? So you can say it is costly to hire bookkeeper and accountant, costly है, and therefore profit would reduce. So ये business का added expense हो जाएगा, profit would reduce. Profit would reduce. एक और आप ये भी लिख सकते हैं कि it is also time consuming. टाइम भी ज़्यादा लगेगा ना. It is also time consuming to maintain अकाउंट्स. टाइम लगेगा, आप टी एंड टी अकाउंट डबल एंट्री वगैरह करेंगे. सही है. इट इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग टू मेंटेन अकाउंट्स. तो ये भी आप बोल सकते हैं. सही है. नाउ लास्ट पार्ट, दिस इज ऑफ 7 marks एडवाइस वाला क्वेश्चन. Osam has now decided that he will need to maintain more detailed accounting records. He's considering using a computerized accounting system. Advise Osam whether or not he should use computerized accounting system. Justify your answer. So up we need to talk about the benefits and drawbacks of computerized accounting system. So if you go, we have already covered them in our notes. So computerized accounting system के advantages क्या हो सकते हैं कि computerized accounting system can be efficient. पहला बेनिफिट हमने लिख दिया, कैन बी एफिशिएंट. इसको आप एक्सप्लेन भी करें पॉइंट को.
as large amount of data can be processed very quickly. सही है. It would also eliminate errors. Errors eliminate नहीं बोलेंगे, it would also reduce. सही है. एरर्स तो फिर भी हो सकती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो ह्यूमन ही प्लग इन कर रहे हैं ना, उसमें डेटा तो एंटर वही कर रहे हैं ह्यूमन. इट वुड ऑल्सो रिड्यूस एरर्स एज इट रिस्ट्रिक्ट्स द रोल ऑफ पर्सन्स. सही है. लोगों का रोल थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, चीज़ें खुद प्रोसेस होना शुरू हो जाती है, तो इससे एरर्स आपके थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं. सही है. और क्या बेनिफिट हो सकता है? लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्पेस वुड नॉट बी रिक्वायर्ड. ये भी बेनिफिट है. ये तो मैंने 3 बेनिफिट बोल दिए. हाउएवर, अब इनके ड्रॉबैक्स पे बात करते हैं. हाउएवर हाउएवर it can have high initial cost to set up and implement the system. आप सेटअप या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसकी एक हाई इनिशियल कॉस्ट हो सकती है. आपको सिस्टम्स वगैरह ख़रीदने पड़ेंगे, आपको इंटरनेट इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड सो ऑन. तो यू विल हैव अ हाई इनिशियल कॉस्ट एज वेल इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम, हाई टू सेट अप एंड इम्प्लीमेंट द सिस्टम. सही. देन furthermore, the staff would need to be trained और रिप्लेस्ड. स्टाफ को या तो आपने ट्रेन करना पड़ेगा, और ट्रेन नहीं हो पा रहे होंगे तो फिर और रिप्लेस, सो दैट दे कैन वर्क ऑन सिस्टम्स. सही है. इसके अलावा और क्या ड्रॉबैक हो सकता है? देयर कैन बी चांसेस ऑफ हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क. आपका डेटा ऑब्वियसली क्लाउड पर होगा. सही है. सो देयर कैन बी चांसेस ऑफ हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी risk as well. These are all the advantages and disadvantages. अब आपने 3 advantages disadvantages लिख दिए. अब एंड में एडवाइस देते. However, I would still suggest Hussam, एडवाइस आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हैं. Hussam, to adopt computerized accounting system computerized accounting system as it would. कोई भी इसके साथ एक पॉइंट भी ऐड कर दिया जो आपको फीसेबल लग रहा है इसके लिए. एज इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर हिम इन लॉन्गर रन. सही. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. थैंक यू.